A warm welcome and hearty good morning to everyone. On behalf of the principal and entire BRS committee, I would like to extend my heartiest welcome to you all for accompanying us today in celebrating the two significant dates in the calendar of BRS Chittaranjan. The foundation day of our school, Burnpur Riverside School Chittaranjan, and Children's Day. I request everyone to kindly rise up for the school anthem. Dispel the gloom, kindle the light, give us the strength, evils to fight. Bless us to win the heart of the foe, to sing in unison, to stand in one row. Over be the night, truth is at sight, we all are a souls. Together with our might, we'll strive for what is just and right. It has been said and believed since long that for any great work to be done, it is important to have the right foundation. It actually forms the platform on which the future stands. This exactly stands true for Foundation Day of our school long back on 11th November 2008. It is therefore obvious that the day is special and needs celebration in due manner. I now request Debjani Madam to kindly come upon the stage and speak a few lines on how each one of us have worked earnestly for the growth and development, the achievement and the academic upliftment of our school. Madam, please. Good morning, everyone. I am extremely delighted to address the 14th Foundation Day of BRS Chittaranjan. 13 years back, our school was founded by some esteemed people like Sri S.K. Sinha, Sri R. Tiwari, Sri S.K. Mago, Madam Chandrakana Mandal, and few dedicated teachers. BRS, as we see now, started as an aspiring school in the technical building with not more than 181 students and with classes ranging from nursery to class 5. As time passed, the school got its own building and shifted in the year 2010 with classes from nursery to class 7. In the year 2013, the school got its affiliation. From here, the school is expanding its branches of records, providing shade of education to thousands, enlightening and igniting minds originating from a seed that was nurtured, nourished, and nursed with tender care. Moving on the path of progress has always been the aim and aspiration of our institution. Keeping in mind the demand of the time, the school has been providing audiovisual education for all classes, the English language lab for enhancing speaking proficiency, and digitalized classroom to make the teaching learning process more interesting. It is said that a school is the workshop of life building in which the raw material is the budding young pupils. The principal and the teachers are molders of this raw material into an ideal mold. At BRS, students are nurtured with a perfect blend of traditional as well as contemporary means for comprehensive development. The students of BRS are creating a benchmark not only academically but also in co-curricular activities. Our tiny tots are also not far behind. Their heartful participation in rainy day activity, Beat the Heat, Baby Show are worth mentioning. Our school also gives due importance to sports activities. I am glad to announce that this year our school is participating in the Sahodaya School Complex activities and our students have bagged prizes in different events.
In the field of social service also, our school has taken an initiative to help the needy and destitute people by conducting the Annadan project. We thank the parents and all the members for their kind cooperation and support in completing the project successfully. We are extremely honored and indebted to our principal madam, Mrs. Kulji, for under whose able guidance and support, we could start the online tutoring from the very initial days of COVID-19 pandemic crisis. The school has been chosen as a center for NEET examination for 2 consecutive years. This would not have been possible without the diligent, dedicated, and amiable teaching staffs who leave no stone unturned to solve the doubts of the students. The dignity of BRS today is because of the infinite patience of devoted teaching and non-teaching staffs, supportive parents, and members of school management. On our foundation day, we take a pledge to work honestly for the growth and development of the institution from all aspects. We seek sincerest blessings and wishes from our all well-wishers so that we succeed in our mission. Thanking all of you again on our foundation day for making this long journey successful and expect your kind cooperation in future also. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. Indeed, we must take vows to uplift the Institute to the greatest possible heights and dimensions. I now invite upon stage Gurmeet Madam for a Hindi recitation. ये है हमारा विद्यालय. Madam, please. सुप्रभात, माननीय प्रधानाध्यापिका महोदया तथा यहाँ उपस्थित सभी का आज मैं हमारे विद्यालय के 14वें स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी भी विद्यालय के लिए 13 वर्ष पूर्ण करना बड़े ही गर्व की बात होती है। यह दिन हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने विद्यालय के लिए यह कविता श्रवण करें। यह है हमारा विद्यालय। हाँ, यह हमारा विद्यालय है, नहीं है जो केवल विद्या का आलय। यह है आलय जिसके अंकुरण में गीली मिट्टी को आकार दिया जाता है, उसकी मासूमियत को सहेजकर उसे समाज का दर्शन कराया जाता है। अंकुर अंकुरित करता है एहसास, बीज बोता है मन में कुछ खास। देखने लगती हैं निश्चल आंखें सपने, पहला चरण होता है यह उनके सुनहरे भविष्य का। आरोहण उन सपनों को देता है उड़ान, उत्कर्ष उन्हें देता है वह कंधा जिस पर बैठकर वह छू लेता है अपने हिस्से का आसमान। जी हाँ, यह हमारा विद्यालय है, नहीं है जो केवल विद्या का आलय। इसका परिसर है प्राचीन गुरुकुल सा, हर शिक्षक करता आचरण अभिभावक सा। रहते ही नहीं यहाँ केवल किताबों के संग, अभिव्यक्ति दिखाती है उनके सतरंगी रंग। भारतीय संस्कृति का रक्षक है यह विद्यालय, नव निर्माण की नई सोच को अपनाता है यह विद्यालय। अंत में आभार प्रकट करती हूँ उनका जिनकी सोच का परिणाम है यह विद्यालय। समाज को दिया महादान का फल है यह विद्यालय। इसलिए तो सबसे अलग, सबसे जुदा है यह विद्यालय। जी हाँ, यह हमारा विद्यालय है। जी हाँ, यह हमारा विद्यालय है। धन्यवाद। End, but school memories are everlasting. Entering the school full of vigor in the morning, greeting friends in the classroom,
forgetting homework, exchanging jokes, and sharing lunch with friends, endless conversation in the school bus, and many more. It's not about the test and grades that matter in the school. Rather, it's all about those happy times and memorable memories that you have with the school. Every child is a miracle, with each having their own ways in making this world a beautiful place. Children's Day or Bal Divas is celebrated on 14th November every year to pay tribute on the birth anniversary of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, for his fondness towards kids. Chacha Nehru has rightly said, the children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. On behalf of everyone, I wish you all a very happy Children's Day. I now request Shobha Madam to extend our heartiest wishes and blessings to the beloved children on this auspicious occasion. Madam, please. आदरणीय प्राचार्य महोदया, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल दिवस के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, जिसे हम बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा जी कहकर पुकारते थे। आज की सुबह आप सभी के लिए एक संकेत है और आपके भविष्य को बदल के रखने की ताकत है। इसमें आपका भविष्य छुपा है। लेकिन साथ ही आज बाल दिवस के दिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों का हमारे जीवन में क्या भाग होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। बाल दिवस हमें ये बताने के लिए होता है कि आज के बच्चे कल के नेता व महान लोग बन सकते हैं। जिस तरह से एक बुजुर्ग को एक लाठी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह भारत को भी एक नए जोश और नई ताकत की ज़रूरत पड़ती है। मेरी तो बस एक ही गुजारिश है कि आप किसी को अगर दान देना चाहते ही हो तो पैसों के बदले किताबें दे देना, शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर आपसे हो पाए तो कभी किसी छोटे मासूम बच्चे से काम मत करवाना और ना ही किसी अन्य को करने देना। अंत में मैं आप सबों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो। सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो। मम्मी पापा का आदर करो, सुंदर भाव से मन को भरो। ये है हमारी शुभकामना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your wonderful words. Children are really budding stars. The more we inspire them, the more they learn. In this pandemic crisis, technology has played a key role in facilitating digital classrooms. The transition from teaching and learning in a physical classroom to a fully virtual environment is a new experience and has set several challenges. I remember one such incident in online classroom when initially children were trying to familiarize themselves with modern technology. Ma'am, you remember when one of the students accidentally shared a video of the very popular comic song Ek Chaturanai from the movie Parosan? All the students started laughing. The class got disrupted and I had to conclude the class at the end. Yes, ma'am, I do remember. That was really a milestone
to look back and laugh. A beautiful song can heal a saddened soul. May I now invite Papia Madam to present a melodious song before us. Dil Hai Chhota Sa. Madam, please. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक छाँव में आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चौकी में बांध ले दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती हिल रही जैसी, मेरा मन भी तो हिल रहा ऐसी। कोयल की तरह गाने को अरमान, मछली की तरह मछलू ये अरमान। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। That was a laudable performance
Thank you, ma'am. I'm sure everyone has sung into the depth of your music and melody. Children are beautiful because they possess something that we have all lost, the quality of innocence. Now let us give a warm welcome to Moushumi Madam to recite a Bengali poem, Ma Ami Skule Jabo. Ma'am, please. মা আমি স্কুলে যাব কলমে তাজরিন মা আমি স্কুলে যাব আমি লেখাপড়া করব রোজই তো দেখি ওই বড় বাড়ির ছেলেটাকে গাড়ি করে স্কুলে যেতে ওর বাবা ওকে প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দেয় কি সুন্দর স্কুলের জামা কাঁধে ব্যাগ গলায় জলের বোতল পায়ে জুতো মোজা পরে ও মা মা আমিও স্কুলে যাব ওর মতো লেখাপড়া শিখবো আমার তো বাবা নেই না হয় তুমি আমায় স্কুলে পৌঁছে দিও আমাদের তো অত বড় গাড়ি নেই আমরা না হয় পায়ে হেঁটে স্কুলে যাব কিন্তু মা আমি স্কুলে যাব আমায় বাসন মাজতে ভালো লাগে না মা তোমায়ও মাজতে দেখলে ভালো লাগে না আমি এই হাত দিয়ে বাসন মাজবো না এই হাত দিয়ে পুরো জাহাজ চালাবো তোমায় নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবো মা আমি স্কুলে যাব মা আমি এই হাত দিয়ে লোকের জুতো পালিশ করব না আমি এই হাত দিয়ে বড় বড় যন্ত্র করব অনেক বড় মা ও মা আমি স্কুলে যাব আমি আর ট্রেনে লজেন্স ফেরি করব না লোকের কিল চড় গুঁতো খেয়ে আমি ক্লান্ত মা আমি ক্লান্ত আমি একটু লেখাপড়া শিখব মানুষের মতো মানুষ হব মা মা গো আমি স্কুলে যাব মা আমি রাস্তার ধারে আর ওই হোটেলে থালা মাজবো না আর নোংরা পরিষ্কারও করব না আমি এই হাত দিয়ে মানুষের সেবা করব আদর্শ ডাক্তার হব মা মা আমি স্কুলে যাব রোজ সকালে উঠে আমি আর কাগজ বিক্রি করে বেড়াবো না রোজ সকালে উঠে আমি বই নিয়ে পড়তে বসবো মা আমি স্কুলে যাব ওই বড় ঘরের ছেলেটার মতো আমিও স্কুলে যাব হ্যাঁ আমিও স্কুলে যাব ধন্যবাদ That was really incredible. Life will challenge you physically, mentally, emotionally, and spiritually. Always learn to endure, keep going through, and rise above the adversity you will face. It so happened in one of my online classes that a girl had switched off her video for a long time and was tapping her feet to the beats of music in full volume behind. I got to know about the incident when she was asked to switch on the camera. I was just totally shocked to find her in a hot mess, with her hair unbrushed and her clothes like that of a clown. Yes, ma'am, I can recollect. We all laughed over her humorous comment in the staff room. My camera is broken, madam. Now we move on to our next performance. Please give a big round of applause for a graceful dance performance by Shatabdi madam. Madam, please. कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं
That was indeed a mesmerizing performance. How captivating! Poetry of footsteps, a perfect blend of cosmic tune and divine music. Childhood is an enchanting vista, an endless fun, a joyful classroom, an experience, an era of imagination, an artistic journey, an ode to love, and a happy moment. To add a moment to your happiness, we now have before us Tomal sir with an instrumental presentation with his mouth organ. Sir, please. Thank you, sir. You have really created a state of trance with your magnetic performance. I'm sure students must have enjoyed it. Now, it's my pleasure to welcome before you Sweta Madam with her recital piece, Jomoj Bhai. যমজ ভাই কবি দেবব্রত দত্ত। ডহরপুরের জহর বাবুর হলো যমজ ছেলে, খবর পেয়ে আসছে কুটুম কাজকর্ম ফেলে। যমজ দেখে পাড়াপড়শির নানান রকম রব, কেউ বা বলে একটা শচীন অন্যটা সৌরভ। দনিপুরের দিদা বলেন হয়েছে কখন ভোর, তাহলে দেখ একটা রবি অন্যটা কিশোর। ফোকলা দাদু হেসে বলে আন্টো মালা ফুল, একটা দেখি রবীন্দ্রনাথ অন্যটা নজরুল। মোহনপুরের মামি বলেন রক্ষে করো ঠাকুর, একটা করো সত্যজিৎ অন্যটা রাজ কাপুর। বীরপুরের পিসেমশাই পেয়েছে নাকি আভাস, গান্ধীজির স্বভাব পাবে একটা পাবে সুভাষ। যখন ওরা বড় হলো কাটলো সবার ঘোর, একটা রকের গুন্ডা হলো অন্যটা ছিচকে চোর। What a mind-blowing performance it was. The expectations of parents, in most cases, are the unfulfilled desires and never-ending passions of theirs. They put the children under strain from the tender age. Let's be there for them, being their guide and friend at every age. Teach them that everyone does not reach the top. Let's play our roles well without burdening them with our aspirations. Unity is strength. When there's a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Our next performance is a chorus song by our very talented teachers. Everybody's best childhood memory
was falling asleep on the couch and waking up in bed. This song will take you back to your childhood days and make you realize that you never become old if you carry your childhood within you. सौभाग्य की एक बात है, बचपन सच्चा साथ है। सौभाग्य की एक बात है, बचपन सच्चा साथ है। भूली जाती नहीं फिर आती नहीं, भूली जाती नहीं फिर आती नहीं। बचपन एक सौगात है। Happy Children's Day to you. 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 खुशी मिले वही जहाँ गिले नहीं, शिकवे शिकायत नहीं। बचपना सही सचपना सही, कोई बनावट नहीं। खुशी मिले वही जहाँ गिले नहीं, शिकवे शिकायत नहीं। बचपना सही सचपना सही, कोई बनावट नहीं। चाहे लड़ते भी है ये झगड़ते भी है, चाहे लड़ते भी है ये झगड़ते भी है, अगले पल फिर बात है। Happy Children's Day to you. 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 कैसी है ये उम्र, नहीं कोई भी डर, हर बात पर माँ कसम। कोई नहीं फिक्र, रहते बेखबर, चाहे खुशी हो या गम। कैसी है ये उम्र, नहीं कोई भी डर, हर बात पर माँ कसम। कोई नहीं फिक्र, रहते बेखबर, चाहे खुशी हो या गम। नखरीला सा है खर्चीला सा है, नखरीला सा है खर्चीला सा है, बचपन में अलग बात है। Happy Children's Day to you. 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 Thank you, teachers. That was really amazing. I'm quite confident that all of us can relate to the song. Last but not the least, we wish, dear children, never give up in life, for you are both a fighter and a winner. A smile of yours can show heaven on earth. A twinkle of your eyes can still us for ages. Nothing will make us happier than watching you grow to be even a better human being than we are. Be diligent in your studies so that you can come out in flying colors and make your parents and teachers proud.
although we are not your parents, we care for you each day. We cuddle, sing, and read to you, and watch you as you play. We see each new accomplishment and help you grow and learn. You come to us for comfort. We soothe away your tears. You proudly show your work to us. We give the loudest cheers. No, we are not your parents, but our role is just as strong. We know someday the time will come when we may have to part. But we know each child we have cared for is forever in our hearts. Now, I heartily welcome our Honorable Principal Madam to share a few words. A very good morning, dear parents, welcome teachers, and my beloved students. Today, we are celebrating school's birthday as well as your birthday. Your teachers did their best to make the event successful. The sapling of BRS is growing to tree because of you, teachers, and other stakeholders who are watering it with passion, dedication, sacrification, determination, and knowledge. As this school has always provided you an upthrust for your upliftment, so give it a present of gratitude and cheerfully wish it a very happy birthday. Also, on this occasion, I wish that you all follow sincerely 3 things in your life. First, respect your parents who are next to the God. Second, say thank you when somebody does good to you. And third, say sorry whenever you do any mistake. Lastly, I thank everyone who made the day a grand success. Thank you, Madam, for a motivational speech. Now I request everyone to kindly rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।